reaction, how we can go for it. First step, you have double stranded DNA. In next step, you need to denature double stranded DNA into single stranded DNA, right? Denaturing takes there should be temperature range from 94 to 95 degrees centigrade, and sometimes from 92 to 95 degrees centigrade. And in this stage, the enzyme used is Smc-Pvt, so which can tolerate high temperature range. Okay, the enzyme which is isolated from a bacteria, Smc-Pvt, right? And that enzyme is known as Taq polymerase. Similarly, in next step we go for the annealing. In annealing step, what will be happening? Actually primer binding. हम इसमें primer ऐड करेंगे तो जो ये single stranded DNA convert हो चुका था, इसके साथ primers bind हो जाएंगे. Primers जो हमने specific segments of the DNA थे, जो basis के specific segments थे, हमने वो ऐड किए, तो वो क्या करेंगे, इनके साथ कॉम्प्लीमेंट्री होंगे इनके साथ प्राइमर्स, और वो फॉरवर्ड प्राइमर है और ये रिवर्स प्राइमर, ये दोनों यहाँ पे बाइंड होते जाएंगे. ओके, और फिर हमने DNTPs ऐड करने, तो DNTPs ये जो गैप है बेसिकली जो बीच में दो प्राइमर्स जब ऐड हो रहे हैं यहाँ पे, तो जो गैप इसको फिल कर देंगे, तो यहाँ पे एक अलहदा से स्टैंड बन जाएगा और ये यहाँ से अलहदा से. तो मीन्स ओवर हेयर देयर वाज अ वन स्टैंड एंड ओवर हेयर देयर आर टू स्टैंड्स, मीन्स DNA is amplified and only a specific segment of the DNA is amplified, right? In annealing stage or primary binding stage, the temperature would be decreased. Sudden temperature ज़्यादा है, 90 की रेंज में है, फ़ौरन से आप 50 to 56 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाएं, टेम्परेचर कम होगा तो there will be binding. That's why we can say primer binding will be facilitated by the rise in temperature. Similarly, extending stage. In extending stage, the DNA, the ligated DNA will be extended, and extension means amplification. And further, the strands will be isolated, and these strands can be used for further sequencing analysis. And in sequencing, we can choose a variety of sequencing approach, like say like Sanger sequences, like NGS sequencing or whole exome sequences. For the Sanger sequencing, if I will explain all these three types of sequencing. For the Sanger sequences, you need to first you should know about like where a mutation is located and what is the position of a gene where mutation we can expect or previously it's reported. तो आपको ये जीन का रीजन पता होना चाहिए Sanger sequencing के लिए, क्योंकि अदरवाइज आप जब Sanger sequencing कराएंगे रैंडमली एक जो है स्टैंड की या एक जीन की, तो यू विल नॉट श्योर कि वेयर म्यूटेशन इज रिपोर्टेड और वेयर म्यूटेशन वी कैन एक्सपेक्ट. लेकिन उसके लिए अगर आपको पता हो कि म्यूटेशन इन रीजन्स में पहले किसी रिसर्च पेपर में या लिटरेचर में रिपोर्ट हुई है, देन यू कैन गो फॉर Sanger sequences and then you will be able, it will be easy for you to find someone mutations via Sanger sequencing. But दूसरा ऑप्शन है हम लोग पास होल एक्सोम सीक्वेंसिंग. तो होल एक्सोम सीक्वेंसिंग में बेसिकली हम एक होल जीनोम सीक्वेंसिंग भी कहते हैं या होल एक्सोम सीक्वेंसिंग. तो होल एक्सोम में हमारे पास 1 एक्सोम सीक्वेंस हो सकती है, 2 एक्सोम या 3 एक्सोम्स की हम सीक्वेंसिंग कराएंगे. लेकिन जब होल जीनोम सीक्वेंसिंग की बात करते हैं तो उसमें सारे एक्सोम्स की सीक्वेंसिंग एक्चुअली आ जाती है. ठीक है, कि एक जीनोम में जितने भी एक्सोम मौजूद हैं उनकी सबकी सीक्वेंसिंग की जाती है और वहाँ पे कोई भी म्यूटेशन अगर मौजूद है तो उसको फाइंड आउट किया जाता है. और म्यूटेशंस फाइंड करने के लिए पहले तो हम क्या करते हैं कि ये जो सीक्वेंसेस के डेटाबेस मौजूद है, ये सारा डेटा आइसोलेट किया जाता है और जो सीक्वेंसिंग का डेटा लिया जाता है और फिर कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के टूल्स यूज़ करके तो उनको डेटा बैंक में जो स्टैंडर्ड जीन्स की जो सीक्वेंसेस हैं उनके साथ मैच किया जाता है और फिर म्यूटेशंस फाइंड की जाती हैं. सो इन नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसेस और NGS यूजिंग नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसेस वी कैन एक्चुअली स्टडी द होल जीनोम ऑफ अ सेल, और उसमें भी हम देख सकते हैं कि कोई म्यूटेशन अगर कहीं पे रिपोर्टेड है तो दैट कुड बी फाइंड एट इजीली. सो PCR हैव very we can say promising kind of application in genetics as well as in molecular biology as well as in microbiology and in a variety of we can say biological led experiments. So PCR is widely used. There are certain types of PCR, real-time PCR, and there are means more developments expected in PCR technology. So if you have any question regarding PCR polymerase chain reaction, this was general means short overview regarding polymerase chain reactions. So the procedure is same we discussed over here, and this is also a conclusion. PCR have very promising application. Without PCR we cannot go for Sanger sequences especially. Okay, and for genomic studies we usually require PCR, otherwise we are not able to perform or
go for genetic studies in detail. That's all regarding today's lecture. If you have any question, post your questions in comment box. Stay tuned and Allah Hafiz.